आपके पास 14 लाख का जो ऑफर था, सो डिड योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू इन दैट कि यार तुम ये मत करो, तुम ये कर लो? व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन इन दैट? बट जब ये डिसीजन छोड़ने का था तो मैंने उनको कंसल्ट नहीं किया भाई। मैंने इनको मेल लिख दी बेन को कि आई एम नॉट जॉइनिंग यू यार। हाउस इट के बाद इट ब्रोक डाउन राइट एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ। मैंने हाउस इट को बिल्ड करते हुए कुछ लोन्स भी एक्यूमुलेट कर लिए थे, तो आई हैड कन्विंस्ड माय कॉलेज प्रोफेसर टू इन्वेस्ट, माय कॉलेज सीनियर्स टू इन्वेस्ट। अब इंडिया में उतना फंड्स नहीं आ रहा है। जो आपने बोला कि वीसी का जो माइंड होता है बहुत साइंटिफिक ड्रिवन होता है, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, देन व्हाई डिड वी सी a lot of companies cutting their valuation, for example Byju's, Oyo? But there is always money for solid businesses. Okay. But a large chunk of money comes from wealthier nations like US, UK or European region, right? Now what happens in macro environment is they have to make a decision in terms of understanding कि कितना equity में रखना है और कितना safer assets में रखना है, which keeps changing as per the macroeconomic environments. And when you see the Indian markets today, they are highly overpriced even in the private segment. So monies that VCs are sitting with, ऐसा नहीं होता यार कि मुझे आज 100 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं तो मैं 100 करोड़ जाके मांगूंगा, right? Yes. VCs keep raising their rounds just like startups keep raising their rounds. So the money that is lying in their bank and not invested is called dry powder. So VCs have one of the highest times of dry powder in the last 2-3 decades still. So that which means that there is money in India sitting in the banks. यार BeatO क्या है, क्या करता है, what is your role and what is your responsibility? So BeatO is India's largest diabetes care management startup. It is the diabetes capital of the world. It's a global problem which is like a ticking time bomb. कि 57% ऑफ इंडिया में जो लोग हैं डायबिटीज के, उनको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है. हाउ AI और हाउ ML और हाउ टेक्नोलॉजीज contributing in healthcare segment. And what we realize is to solve for diabetes in India, there are 3 A's to solve for. Access, affordability and awareness. I was studying somewhere कि यार US में अभी तक 140 HealthTech के यूनिकॉर्न्स आए हैं, right? While India has only 8. We in general in India do not believe in innovation. China is beating USA's ass in terms of the AI race. If you go and see what is happening in China and see the videos, government is massively investing into AI, right? How do you think these students who are not have the exposure of this life, the corporate world, can upskill themselves? What are the resources and how they can manage to pursue their career in these fields? So, hi Rajat. First of all, thank you so much for joining us today, and welcome to Success Secrets podcast. Just to begin with, right, I would like you to tell us something about your college life and the reason behind your first startup, How's It? The reason I'm asking this is because जब आप वो startup बना रहे थे तब आप भी कॉलेज में थे और मैं भी कॉलेज में था, बट मैं अभी कंपनी में एज एन इंटर्न काम कर रहा था. So I just want to understand the difference between the mindset of two people, who are in college but doing different things altogether. So yeah, over to you. फंक्शन ऑफ टाइम भाई, आज तुम पॉडकास्ट बना रहे हो और मैं जॉब कर रहा हूँ. तो यस, बट यार मैं उससे पहले बिफोर कॉलेज, बिफोर माय माइंडसेट, आई विल टॉक अ लिटिल अबाउट माय सेल्फ. Yes. So born and brought up in Delhi, the youngest member of a joint family of 6. I come from a Jat family, and my family has always been into business. Okay. तो मैंने बिजनेस देखा यार, हमेशा डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन बिजनेस है, माल कब आ रहा है, कितना उतरना है, इसने कमेटी में इतना ले लिया, इसकी सेल आज इतनी है, इसको रखना है, इसको निकालना है, राइट? ऑल दोस कॉन्वर्सेशंस एंड अप गोइंग अराउंड योर हाउस, इट गोज एंड इन योर ब्रेन. सो मुझे ये तो पता था कि जिंदगी में बिजनेस करना है. देखो, अगर इन घर वालों के सामने अगर अपने आप को सक्सेसफुल साबित करना है तो मतलब बिजनेस है. तो दैट बिकेम द थॉट, बट ऑल्सो फॉर्चुनेटली आई हैड वेरी गुड एजुकेशन. तो आई रियलाइज्ड कि मेरे को ट्रेडिशनल धंधा नहीं करना है, मेरे को थोड़ा सा मॉडर्न वे करना है. और उस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2015 2017 व्हेन स्टार्टअप वाज अ बज़वर्ड. मैं कहा स्टार्टअप वार्टअप कुछ करना है भाई, ये मतलब बड़ा नाम है, बिजनेस जैसा कुछ लग रहा है और ये अभी का बड़ा मतलब चीज है, राइट? सो फ्रॉम दिस आई वांटेड टू एक्चुअली गो अहेड and I started my first business in class 11th, which was very simple. Rajma chawal बेचेंगे roadside. ठीक है? Okay. I love rajma chawal. I said there has to be better way of selling this rajma chawal. यार 50 रुपए की प्लेट बिकती है, दिन की 50 प्लेट बिक जाती है, 2,500 रुपए की दिन की इनकम है, 30 बेचोगे 75,000 की है.
30% का प्रॉफिट मार्जिन है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे महीने का। मैंने कहा बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, इसको थोड़ा सा बेटर कर दिया तो ऐसी 10 एडी बना दूंगा, 2 लाख रुपए महीने की इनकम, मैं तो मतलब लाखपति बन गया, राइट? Yeah. So this was how my model started, and I did everything. I jugadofied the MCD, police, chef, कौन सा राजमा, कौन सा चावल, कौन सा बोर्ड, कहाँ पे लोकेशन and everything. And I told my dad कि पापा कल से ये स्टार्ट कर रहा हूँ, इनॉग्रेशन है, आ जाना। Okay. So uh, my dad gave me a tight slap. कहता ये करना है तो वो देख, मेरे मेरे साथ तो नहीं कर सकता है, तेरा नाम होगा नहीं होगा, मैं अपने लड़के को राजमा चावल बेचते हुए तो नहीं देख सकता। ठीक है। So fortunately or unfortunately, my first startup stopped even before starting. Okay. Okay. वो जो मैंने 5,000 की इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो सब कुछ डेड हो गया। मैंने पढ़ाई पे फोकस किया एंड आई गॉट 97% इन बोर्ड्स, गॉट इनटू हिंदू कॉलेज। Okay. सो अब मेरे को हिंदू पहुंचते ये समझ में आ गया कि देखो मम्मी पापा तो नहीं है यहाँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? सो दिस इज वन थिंग व्हिच देन अब माय एस्पिरेशन फॉर स्टार्टअप वाज देयर and the fear of mom dad was not there, so I could do everything, right? Yes. Fortunately being in Delhi University, आपकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती है, Okay. right? I'm spilling the secrets here on the success secret Yeah. podcast. So you have to just fill a bond at the end of the year that for some XYZ reasons you couldn't do that, and next year में complete कर लोगे। वो थर्ड ईयर में भी आप यही भरते हो कि मैं थर्ड ईयर के बाद ही कंप्लीट कर लूंगा और आपका कॉलेज खत्म हो जाता है। ठीक है। So, मैं कॉलेज रोज जाता था बट मैं क्लास कभी नहीं जाता था। So Okay. I started ECEL in the first year of college, then started Leo's Club, then started a Traders Club. ये 3-4 क्लब अलग अलग मैंने, कोई सोसाइटी लेवल पे, कोई कॉलेज लेवल पे, कोई इंटर कॉलेज लेवल पे, कोई इंटायर यूनिवर्सिटी लेवल पे, कोई पूरे नॉर्दर्न इंडिया लेवल पे अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ से मेरे को बेसिक लीडरशिप, बेसिक चीजें ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग, हाउ आर डिफरेंट थिंग्स गोइंग अराउंड, व्हाट आर द न्यू थिंग्स, मार्केटिंग क्या होता है, एचआर क्या होता है, लोगों कैसे मोटिवेट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आई कुड अंडरस्टैंड, राइट? सो इन द सेकंड ईयर देन आई डिसाइडेड कि यार ये हो गया कॉलेज वाली सोसाइटी, बहुत बढ़िया, ऐसे सीवी भी बन गया, चीजें सीख ली, बट सब्सटैंशियल नहीं है ये। व्हाट नेक्स्ट, हाउ कैन आई गो अहेड? Yes. तो देन आई डिसाइडेड कि स्टार्टअप करना चाहिए। और उस टाइम में इंटर्नशिप वगैरह भी कर रहा था, तो आई वाज मीटिंग डिफरेंट पीपल, लर्निंग फ्रॉम देम अबाउट डिफरेंट स्पेसेस। तो मेरा बिजनेस इंटरेस्ट हमेशा से था, आई कुड सी बिजनेस इन एवरीथिंग। Okay. तो मेरे सामने एक जो ओपन बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी कि यार मेरे आसपास बच्चे हैं और इन बच्चों को 60% ज्यादा बच्चे बाहर से आते हैं, दे आर माइग्रेटरी स्टूडेंट्स। सो वेयर व्हाट इज माइग्रेटरी स्टूडेंट इज दे लीव अ पर्टिकुलर स्टेट टू गो स्टेट फॉर एजुकेशन, राइट? Yes. And Delhi being Delhi, Delhi is not a does not enjoy a good reputation in the country, right? तो यहाँ पे पेरेंट्स का डर बहुत ज्यादा होता है कि यार मेरा बच्चा नई स्टेट में जा रहा है, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, हॉस्टल नहीं मिला तो क्या, कितना रेंट होना चाहिए, कहाँ पे रहेगा, खाना कैसे खाएगा, कॉलेज कैसे जाएगा, राइट? सो इफ वी रियलाइज्ड कि अगर इसके लिए ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म बना दें, राइट, और इसे फ्री कर दें तो बच्चे तो आ जाएंगे, राइट? और इससे बस हमें पैसा कमाना है। और सिंस आई वाज इन कॉलेज, मेरे लिए देयर वाज नो मार्केटिंग कॉस्ट, एवरीबॉडी आई वाज टॉकिंग टू वाज लिटरली माय कस्टमर, राइट? Yes. So this is how my first venture started. Uh, Believe me, I used to, being a grad of Hindu college, got 97%, doing acing in my life, doing internships. The next day, I was in the north streets of North Campus with my phone in my pocket, going around on a scooty like a broker. तो मैंने ब्रोकर की तरह काम किया यार पहले 6 महीने, समझा मार्केट में कौन है, 4-5 ब्रोकरों से समझा, कस्टमर्स को समझा, उनको क्या चाहिए, मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, क्या पूरा का पूरा फाइनेंसिंग मॉडल कैसे वर्क करता है, ओनर्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए. सो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग दैट इन द फर्स्ट 6 months, I could build some assets, build some understanding of the market, build some understanding of the user segment. उसके बाद मैंने टेक इंट्रोड्यूस करके इसे प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया. ठीक है. So I am my co-founder Bharat, fantastic friends together. We used to love working and we used to love solving problems. So this is how Howsit was born, and did that for one almost odd year. तब मेरी कंसल्टिंग में प्लेसमेंट हो गई थी, तो आई वाज ऑफर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस इन डीयू विद कंपनी. 14 लाख का पैकेज था. ठीक तो है. मैंने ग्रेड के बाद 14 लाख रुपए, यार मतलब आई विल बी गॉड डैम रिच. घर वालों के लिए तो बन गया हूँ. So I was at the nexus of either going in a cushy corporate job and doing consulting, or doing my own startup, जहाँ पे मैं basically एक traditional नहीं, so एक modern broker हूँ, right? So my obvious choice was going into consulting, but I left it. So I Okay. said startup and did that. यार
It was a fantastic journey. Hmm. काफी अच्छी टीम बनाई, काफी अच्छा स्केल किया, फंडिंग रेज की. Then COVID happened, things went downhill. But Yes. all in all, if I look back and see my decision, I have been never more proud of my own self, and I've never been lived fully like those days in house it. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. इस चीज से मेरे को एक और चीज याद आई. कमिंग फ्रॉम जाट फैमिली एंड आई कम फ्रॉम पंजाब, राइट, टियर 3 सिटी. हमें वहां पे स्टार्टअप वार्टअप का इतना कुछ पता नहीं था शार्क टैंक आने से पहले, राइट. एंड आपके पास 14 लाख का जो ऑफर था, सो डिड योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू इन दैट कि यार तुम ये मत करो, तुम ये कर लो? व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन इन दैट? भाई पहले तो जब मैंने घर वालों को बताया कि मेरी 14 लाख की नौकरी लग गई है, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ. उन्होंने अच्छा. बोला झूठ बोल रहा है कि कोई एक अंडरग्रेड लड़के को 14 लाख रुपए क्यों देगा, तेरे को तो वैसे कुछ नहीं आता. सही बात है. उनके लिए तो तुम घर के सबसे छोटे लड़के हो, तुम तो नालायक हो, तुम तो पैसा उड़ाते हो, तुम्हें कौन यस. पैसा दे रहा है भाई. यस. तो उनको पता नहीं था, उनको मतलब उनको शौक लगा. मैंने उनको जब ऑफर लेटर वगैरह दिखाया तो उन्हें लगा हाँ, चलो हाँ ठीक है, बढ़िया है, ये लड़का कुछ तो जो इतना बोलता रहता है घर में, कुछ ना कुछ तो कर लेगा ये जिंदगी में. मैंने कहा ठीक है, चलो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया. बट जब ये डिसीजन छोड़ने का था तो मैंने उनको कंसल्ट नहीं किया भाई. मैंने इनको मेल लिख दी बेन को कि आई एम नॉट ज्वाइनिंग यू, आई हैव डिसाइडेड पे, एकदम मस्त ईगो वाली मेल, आई हैव डिसाइडेड टू डू माय ओन स्टार्टअप, सी यू इन द ग्राउंड करके. अच्छा. और then next day I told my parents that I've left the job. So they were surprised. They thought, did you? They questioned me कि तूने पक्का सोच लिया है ना सब कुछ. मैंने कहा अब तो कोई फायदा भी नहीं है वैसे, क्योंकि अब तो हो हो गया गया. है. But they supported me. I'm very Okay. grateful. My parents like really supported me on that one. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. हाउस से निकलने के बाद, राइट, यू वर्कड इन हाउस एंड कोविड आया, उसके बाद चीजें नीचे गई, उसके बाद आपने Yeah. ब्लूम वेंचर्स में काम करा, राइट. Yeah. हाउ डिड यू लैंड अप वर्किंग विद ब्लूम वेंचर्स एंड व्हाट वाज योर रोल एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या क्या मिला, क्या क्या चीजें सीखने को मिली जो आप आज अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो? यार करण, सो आई इसके बीच में ना एक और जर्नी है, मैं वो बताता हूँ पहले, which I'll help you understand the perspective of startup to a job and then the startup, the segment of VC, right? ओके. So, यार हाउस इट के बाद इट ब्रोक डाउन, राइट, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ. आज मैं जितनी हंसी मजाक में वो बातें बोल पाता हूँ, फॉर अ 21-year-old who had put everything on the line and it failing was a big time thing, right? So यस. my confidence broke, my mental health broke, I put everything on the line for this. तो 2-3 महीने मैंने कुछ नहीं किया. I was in a bad fear space of my life. I couldn't think straight. And fortunately I had good friends, family around and I could bounce back. तो आने के बाद यार मैंने हाउस को बिल्ड करते हुए कुछ लोन्स भी एक्यूमुलेट कर लिए थे. तो आई हैड कन्विंस्ड माय कॉलेज प्रोफेसर टू इन्वेस्ट, माय कॉलेज सीनियर्स टू इन्वेस्ट. आई हैड आल्सो took some money from my family and friends, right? तो उस टाइम मेरे को ये था कि यार इनको पैसे वापस देना है, बिकॉज माय वर्ड, सो दिस इज अगेन माय लर्निंग्स फ्रॉम माय जाट फैमिली, वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन यस. बिजनेस. तो उन्होंने मेरे वर्ड पे ट्रस्ट किया था, आई हैव टू ऑनर माय वर्ड एटलीस्ट. सो आई सेड दैट यार देखो अभी इतना बड़ा झटका लगा है, आई कांट टेक अनदर रिस्क इन माय फैमिली, रिस्क इन माय लाइफ राइट नाउ. लेट मी टेक अ स्मॉलर स्टेप, लेट मी गेट सम मनी एंड पे बैक द पीपल हु हैव ट्रस्टेड मी एटलीस्ट. तो यहाँ से जॉब का आइडिया आया. ओके. तो आई वर्कड in collab which was started by two IIM Ahmedabad के alums, Bloom Venture backed. Basically क्या था, बच्चों को अपस्किल करके जॉब रेडी करते हैं मार्केट के लिए. This was a very simple idea, and since I understood the student market, they asked me to join as the head of growth, ओके. essentially ensuring कि how can we crack this market and get the students, and we did that fantastically well for 6-7 odd months. Our cost of acquisition was less than 3 rupees per student. ओके. So it was a fantastic model, everything was going well. And this is where I was learning कि यार मैं जब post undergrad और during undergrad अपना startup build कर रहा था, it was a lot more passion driven rather than a lot more science driven, right? I did not have the framework to solve a lot more complex problems, which these two IIM Ahmedabad guys had. ओके. But another thing which I realized I had that these guys did not. So since they were very educated and worked in a very professional environment, they did not understand the user too much, right? They were thinking very logically about the user. But यार user ना emotional है, user logical नहीं है. जो economics में पढ़ाते हैं ना कि user से ज़्यादा logical, it's a rational consumer. It is highly flawed. I think all of us are emotional and we make our decisions emotionally. Which I realized that what is good about me is that being on the ground, being very close to people,
I could understand their emotional triggers. I could understand their emotional reasoning behind making certain decisions. So I realized the good thing is ये passion और जो emotional learning मैंने लिया अपने startup से इसको रखते हैं और जो इन लोगों ने पैसा और framework of solving बनाया है this solves a lot more things इससे ये learning लेते हैं. So did that. उसके बाद the startup closed. Right? They could not get the next round of funding and they closed down. Okay. So then I decided क्या करना है next. उसके बाद I started writing mails, random cold emails, and I got in touch with Arpit Agarwal, who was the founder of Bloom. Founder, नहीं, partner at Bloom. Okay. Okay. So I said, I'm this, and I've done this. I would love to work with you. So he said, intern करेगा. मैंने कहा यार तुम एक 14 लाख की नौकरी छुड़वा के एक स्टार्टअप फाउंडर बनवा के तुम यहाँ पे हेड ऑफ ग्रोथ बना के इंटर्नशिप दे रहे हो क्या कर रहे हो मेरे साथ. So I thought this is probably my life's way of humbling me down, and I took that honestly. So Okay. मेरा ego टूटा, but if I look back now, I think I've never made a better decision in my life than that. अब आपको मैं VC world के थोड़ा सा dynamic समझाता हूँ, and then I'll help you understand what my learnings were. So VCs operate on a very different paradigm, right? We Okay. always keep hearing the news कि इस कंपनी इस स्टार्टअप ने इतने करोड़ का लॉस कर दिया, इस स्टार्टअप ने इतने लाखों का लॉस कर दिया. So we always keep thinking कि VC इनको बार-बार पैसा क्यों दे रहे हैं, right? Yes. This is a very logical question which all of us might think through. But if you look at the VC world, VC is essentially an asset class. Okay? So let's say आज करण आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने को, right? आप ट्रेडिशनल और लेट्स से ट्रेडिशनल कन्वेंशनल थॉट्स के हिसाब से आप क्या करोगे, आप 50-60% अपना डेट पे डाल दोगे, 30-40% आपका थोड़ा सा लेस रिस्कियर इक्विटी में डाल दोगे, और जो बचा हुआ 15-20% है आप हाईली रिस्कियर एसेट क्लास में डालोगे, जैसे कि एग्जांपल वेरी रिस्की स्मॉल कैप, मिड कैप, बिटकॉइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस इज हाउ टिपिकली मोस्ट ऑफ अस विल इन्वेस्ट. Yes. अब ये 100 रुपए हैं, अगर ये 1 लाख करोड़ हो तो उसका जो 5% है that is reserved for playing into high riskier classes, right? People who have very high net worth, उनका जो 5 या 10% है goes into highly risky asset classes like equity or private equity, which is this startup network. तो ये पैसा जो है ना, ये पैसा आता ही higher expectation of return है के साथ है. So when VCs come into the market, they have to generate higher returns than usual. Okay. So for that, they have to invest in startups which have the ability to give very high returns. And higher returns कब दोगे आप, जब आपकी high rate of growth होगी, right? And you're doing fundamentally something radical, fundamentally something different, which is going to give them those multiples. So इसलिए जितने भी VCs होते हैं, they invest in very high growth startups and they keep doubling down their investments because their anticipation is आज आप 100, 200, 300 करोड़ डुबा रहे हो, but आप market acquire कर रहे हो. And at one point of time, you'll be so much large that all the losses that you've made in the last 5-10 years, those will be covered. Example, Zomato अगर 5 करोड़ ऑर्डर दिन के करता है, अगर वो 1 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस भी लगा दे, that is 5 crore rupees of profit. Yes. But if you took at 5-7 years down back in their history, they might be making thousands of crores of losses, right? So this is how VCs invest, and this was a very different mindset for me. For me, business was always passion. कि आज मेरे को यहाँ से वहां पहुंचना है, आज मैं 100 हूं, मेरे को 90 कैसे पहुंचना है, 80 कैसे पहुंचना है, 70 कैसे पहुंचना है, नंबर 1 कैसे पहुंचना है, राइट? ठीक है. But for VCs, it's very much science driven. They have to understand the market कि market में market कितनी बड़ी है, उसमें gaps क्या है, ये gap अभी ही क्यों exist करता है, 5 साल पहले या 5 साल बाद क्यों नहीं, इसमें से कौन से exact models work करेंगे, कौन सा financing model work करेगा, कौन सा founder पे bet करना चाहिए. So it's a lot more science, and of course there's a layer of intuition there. So that was a very different learning spectrum for me because I could understand the science of startups and the macro environment of startups. Okay. Doing that, and I'll give you a very simple anecdote. So Arpit, sir, I was used to work with him and I used to do a lot of things. How he used to train me is that during 5 p.m. he used to go for his walks. He used to take out his nuts and Panchil Park में अपना ऑफिस था, वहीं पे ही बाहर निकलते थे. तो वो बेसिकली यहाँ से नट्स खाते हुए जाते थे, चाय पीते थे और चाय पी के वापस ऑफिस आते थे. 15-20 minutes. ठीक है. So he used to give me कि Rajat, let's research these 4-5 things today. I used to do that research, and in those 15 minutes, he used to keep asking me questions. Okay. Rajat, if this, then why this, then why this, then why this, and when he used to keep asking me whys, I used to get stuck at one point of time. Okay.
Then he used to ask me go to do research and come back again for the next day. Okay. So those 15 minutes of his day's time made me realize a lot more things about, in general, about startups than my 3 years of investing in startups, doing it myself. Understood. Right. Okay. Suppose that I had an option that I can continue working in the VC world, or I can shift to one of the portfolio companies as the chief of staff. Okay. तो आई सेड किया ठीक है, मतलब ये तो ऑब्वियस चॉइस है, पीसी करना चाहिए मेरे को, इट्स लाइक हाईली रेप्यूटेड, इट्स फैंटास्टिक, इट्स इंटरेस्टिंग. Hmm. So and I had a word with Arpit, and he said that Rajat, the person you are, you love to stay in action. Hmm. Which I also realized कि देखो दुनिया के हिसाब से VC looks more lucrative, it's highly reputed, it's high paying, it's cushy, very few people are doing it, everything. But the kind of person I am, I like to be in action. I like to build something on my own. मैं Hmm. मैं एक्सेल रिसर्च पीपीटीज कर लूंगा, मैं पर ज्यादा समय तक नहीं कर सकता. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ माय जॉब बट इट कांट बी माय जॉब. Understood. So from that I took the road to go get into BeatO. And Hmm. again, now looking back, I think it has been one of the greatest decisions I took. It has been 2.5 years odd with BeatO. And I have learned so many things. So when I joined, just 6 months after that, we raised Series B for 33 million. लगभग 250 crore रुपए होते हैं, right? Hmm. तो यार अब मैं आ रहा हूँ हाउस इट में, अंडर ग्रेड में 5-5 लाख रुपए के लोन से कंपनी बिल्ड करने से Hmm. 250 करोड़ आपके बैंक में, Hmm. राइट? गेम जस्ट चेंजेस. Understanding how capital solves a lot of things, how experienced people think, how money solves problem at such a large scale, right? How technology comes into equation, how different supporting functions come into the equation. ये सब मुझे समझ में आया. So ठीक है. essentially, how does a 150 crore company, annual revenue company is built? That I saw very closely working with the founders and the entire team. Okay. So, and I went all in, yeah. I used to not think about day, night, weekends, weekdays, Hmm. whatever. And I did everything. So from packing orders to making sales calls to going to customer support teams to creating decks to doing researches Hmm. to hiring people to streamlining teams, everything under the sun I did. ठीक है. And it has made my understanding of startups a lot more clearer than, again, the 3 years of house it that I was doing on my own. Understood. Understood. ठीक है. So yeah. Okay. Okay. Cool. Thank you so much for this brief, telling us about the brain behind a VC and brain behind a startup founder as well. But मेरे को एक क्वेश्चन है इसी चीज में, VC वाली चीज में, मैं बीटो वाली चीज में बाद में आता हूँ. हमने क्या देखा ना कोविड के दौरान एंड कोविड से पहले फंडिंग आ रहा था काफी अच्छा, लोगों को क्रेजी फंडिंग एंड क्रेजी वैल्यूएशन में मिल रहा था. ये मैंने क्वेश्चन मैंने लास्ट पॉडकास्ट में पूछा था. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू यार कि अब इंडिया में उतना फंड्स नहीं आ रहा है. जो आपने बोला कि वीसी का जो माइंड होता है बहुत साइंटिफिक ड्रिवन होता है, बहुत सारी रिसर्च करते हैं. देन व्हाई डिड वी सी अ लॉट ऑफ कंपनीज कटिंग देयर वैल्यूएशन? फॉर एग्जांपल बायजूस, ओयो, राइट? दीज आर द टू मेजर कंपनीज जो इंडिया में है, जो बिल्कुल मतलब ओयो तो फिर भी सस्टेनेबल है, भी चल रहा है, बट बायजूस का तो बहुत बुरा हाल हुआ है. सो व्हेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, हाउ अ पर्सन कैन अवॉइड दीज थिंग्स? लाइक अगर कोई स्टार्टअप बना रहा है अपना, तो वो कैसे अपने स्टार्टअप को खत्म होने से बचा सकता है? So how they can prepare their mind accordingly and take actions according to that. Okay. So Karan, firstly, I'll address the point ki we keep hearing these news ki capital is a constraint, startups are not getting funding. Sorry, FDI has been cut by this much percentage. Last year ka funding itna tha, ye wo. But there is always money for solid businesses. So I want to first put that down. And more businesses fail for not being able to understand their business or their consumers or the founders having a fallout than the startups not being able to raise funds. Okay. So Okay. whenever there is a solid idea, funding will never be a problem. Now Okay. coming to the entire macro environment ki kyun paisa itna hai aur kyun nahi hai, it is driven by macro environment and it is driven by narratives. ठीक Okay. है. So on a global scale, India's narrative is being built very strongly. Okay. Yes. So that is a good thing because now with the very high young population, with largest democracy, with blah 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 in China plus one strategy XYZ, there is at a global scale India का एक बहुत strong narrative built है. So everybody across the globe is trusting to invest in India, right?
सो दिस सॉल्व्स कि जब आपके पास 3 कंट्रीज में ऑप्शन होगा, आप प्रोबेबली इंडिया पे डबल डाउन करोगे। ठीक बट है। अब सबसे ऑप्शन आपको समझना पड़ेगा ना, ये कैपिटल आता कहाँ से है यार? ये कैपिटल आता है या तो वेल्दियर नेशन से या वेल्दियर इंडिविजुअल से। हम्म। So people who have taken exits in India, who come from corporates or double second time founders, third time founders, whatever. हम्म। Let's say there are solid governments, there are solid family offices, XYZ. So whenever there are, let's say, rich Indians investing in India, ये पैसा आता रहेगा, ये पैसा चलता रहेगा. ठीक है। But a large chunk of money comes from wealthier nations like US, UK, or European region, right? हम्म। Now, what happens in macro environment is they have to make a decision in terms of understanding कि कितना equity में रखना है और कितना safer assets में रखना है, which keeps changing as per the macroeconomic environments, right? First is that, and also the interest rates that are going on in general. So that leads to a lot of money being, will it be driven to safer assets or will it be driven to riskier assets, right? Okay. So in general, that money has been going down and going up because of the macroeconomic trends. So हम्म। prior to 2020, there was a boom, right? 2015 to 2018 or there was a lot of money in the Indian segment. ठीक है। But then COVID happened, so everybody was not that pro investing. Everybody was shutting down. The macroeconomic environment was not good. बट पोस्ट द कोविड ओपन देयर वाज अ इन्फ्लक्स ऑफ मनी, क्योंकि 2 साल का जो रुका हुआ पैसा था वो दोबारा मार्केट में आया. एवरीबॉडी वांटेड टू हैव वेरी हाई रिटर्न, एंड यू कैन सी दैट मनी साइकिल पंपिंग अप. But now in back in 2024, you can see that the US economy is suffering, that the European economy is suffering. There is a Russian war going on. There is Israel-Palestine war going on, right? So there has been a lot of problems going around in general in the global space. So investors have been a little more cautious, right? Okay. And even when you see the Indian markets today, they are highly overpriced, even in the private segment. So हम्म। all these things leads to global investors being a little fearful of investing in India. So Okay. तो मैक्रो इकोनॉमिक में थोड़ा पैसा कम हुआ, हम्म। बट इंडिया का ग्लोबल जो नैरेटिव है वो भी चलता जा रहा है, राइट? हम्म। So hence money is still coming in, but not as high as it used to come earlier. But again, I think the solid founders, solid companies will always have access to capital and always have access to money. Understood. Understood. Thanks Yeah. for your clarifying this thing because बहुत startup world में, because I also work in a startup, तो we see news every day कि ये startup बंद हो रहा है या funding नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये startup बंद हो गया. So I want to clear this point very first कि if your idea is good, you have that passion, you have that research behind you, you have the money, right? You just have to find the opportunity in that. So even if you see what is, so monies that VCs are sitting with, ऐसा नहीं होता यार कि मुझे आज 100 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं तो मैं 100 करोड़ जाके मांगूंगा, right? Yes. VCs keep raising their rounds just like startups keep raising their rounds. So the money that is lying in their bank and not invested is called dry powder. So VCs have the one of the highest times of dry powder in the last 2-3 decades Okay. still. So that, which means that there is money in India sitting in the banks, but due to the valuations or due to, let's say, not really strong businesses coming up or due to the macroeconomic environment, whatever, VCs have been a little more cautious of investing in the right startups, right? Understood. So there is money again, but only for the right kind of startups. Yes, because VCs को भी तो अपना रिटर्न देना है ना, जिनसे उन्होंने लिया है, राइट? दे हैव अ बॉन्ड कि उनको 10 साल में जो भी इनका बॉन्ड रहता है कि उनको ये पैसा वापस करना है विद एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न्स. सो इट जस्ट कि यू हैव टू पुट योर गुड आइडिया इन फ्रंट ऑफ देम, राइट? कूल. Yes. कूल. सो ये इसके आगे जाते हैं, बीटो पे आते हैं, राइट? So if you can just help us understand what is BeatO. I have done my research, but I want to tell my audience कि यार BeatO क्या है, क्या करता है, what is your role and what is your responsibilities in that. So BeatO is India's largest diabetes care management startup. Okay. टेक्निकलिटी छोड़ देते हैं, या चलो क्विक नंबर्स पे डिस्कस कर लेते हैं. सीरीज बी फंडेड है, 3 को फाउंडर्स हैं, 400 के आसपास एम्प्लॉई काउंट है, 150 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू है, 3+ ऑफिसेज हैं, राइट? दिस इज व्हाट द कंपनी के क्विक नंबर्स आर. बट हम करते क्या है यार, आप हमें समझ सकते हो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट. Okay. So diabetes or sugar की बीमारी, as it's frequently called, is one of, so India is the diabetes capital of the world, right? Yes. And it's a global problem which is like a ticking time bomb, because people do not realize they have diabetes until they go and get in a lab test report. Most people in India today who are probably pre-diabetic or already are diabetics might not even realize that they have diabetes, right? They discover at certain point of time and the harm is already done, and it's a lifestyle disease which is very difficult to reverse or let it go. Yes.
So what we do is we have our own coin size device. This is a very small device. It's a patented technology. ये आपके फोन में कनेक्ट होता है और आपके Okay. फोन को शुगर टेस्टिंग मशीन में कन्वर्ट कर देता है. ठीक Okay. है. तो आप उसी फोन से अपनी शुगर रीडिंग ले सकते हो, पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख सकते हो, डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो, कोच से बात कर सकते हो, डायबिटीज फ्रेंडली स्नैक्स ले सकते हो, मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो, लैब रिपोर्ट देख सकते हो, पुरानी लैब हिस्ट्री देख सकते हो, राइट. सो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर डायबिटीज नीड्स. Hmm. दिस इज टिपिकली व्हाट वी डू. ठीक है. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि यार आप लाइक बेसिकली यू आर सॉल्विंग द डायबिटीज प्रॉब्लम, या बिकॉज आई वाज रीडिंग समवेयर कि 57% ऑफ इंडिया में जो लोग हैं डायबिटीज के, उनको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है. सो वो अपना इलाज ही नहीं करवा पाते हैं. उसमें से 23 लाइक 2024 में अराउंड 23 करोड़ के आसपास लोग जो टोटल डायबिटीज के केस है, तो 13 करोड़ अपने आप को उनको जिनको पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज है, उनका राइट. कोई हो ही नहीं पाया, उनका कोई सॉल्व नहीं कर पाया, एंड दे डाइड. So I would like to understand here how AI or how ML or how technologies, contributing in healthcare segment basically. Yeah, so you're very right that there is a serious problem with people not being diagnosed with diabetes at the right point of time. और ये होता क्यों है? क्योंकि ना आपको चोट लग गई तो आपको वूंड दिखता है, Hmm. राइट. आपको तबीयत खराब हो गई, आपको खांसी आती है. बट Hmm. डायबिटीज के सिम्टम्स ना इमीडिएट नहीं है, इट्स लॉन्ग टर्म. सो Hmm. मोस्ट पीपल विल नॉट रियलाइज दे हैव डायबिटीज until they get a lab report done, which is the HbA1c test, or they get a sugar testing done. एंड HbA1c आप कब करवाते हो? या तो आपके इंश्योरेंस लेड हो, Hmm. या आप हेल्थ केयर में इतने आप हेल्थ एंथुजियास्ट हो कि आप करवाते रहते हो, या कभी आप की तबीयत खराब हो गई थी, आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बोला सर एक बार बॉडी चेकअप करवा लो, और उसमें आपको चलता है डायबिटीज है आपको, राइट. Yeah. सो दिस इज अ बिग टाइम प्रॉब्लम. एंड इन लेट्स से अर्बन सिटीज स्टिल पीपल आर कॉशियस एंड दे अंडरस्टैंड कि मेरे को डायबिटीज हो गई है. बट इन रूरल एरियाज द प्रॉब्लम इज इवन वर्स, बिकॉज डायग्नोस आप डायग्नोस्टिक की पेनिट्रेशन भी नहीं है उतना Hmm. significant. So, what you're saying is absolutely a key problem. And what we realize is to solve for diabetes in India, there are three A's to solve for. uh, Access, affordability and awareness. So awareness की जो हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज है भी या नहीं आपको, और डायबिटीज होती क्या है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसे रिवर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपको लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए, राइट. ऑल दीज थिंग्स कम एज अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस, व्हिच इज अ बिग टाइम प्रॉब्लम, बिकॉज as you said 57% of people don't even know that they have diabetes. Second is access. So again, in urban cities, it is very easier for us to access healthcare Yes. at the click of our phones, or in the nearby private hospitals, public hospitals, or clinics. But at a larger scale, think of a person, let's say, who's in a small district in Jabalpur, who's doing a security guard job, let's say, and has a 12 to 15,000 rupee monthly income. अब उसको अगर अपनी हेल्थ रिपोर्ट चेक करवानी है ना, उसे एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी नौकरी से. Yes. उसको पास वाले गांव में बस से ट्रैवल करना पड़ेगा सिटी सेंटर में, वहां Hmm. के हॉस्पिटल लाइन में लगना पड़ेगा, Hmm. अपने 500 रुपए की पर्ची बनेगी, 300-400 रुपए की दवाइयां बनेंगी, वो देना पड़ेगा. उसके बाद रात की बस पकड़ के घर आना पड़ेगा, और अगले दिन नौकरी पे जाना पड़ेगा. फॉर हिम इट्स अ 1 डेज लॉस एंड 800 रुपी एक्सपेंस, Hmm. right? So how can you make it accessible? So for that, what we have been doing is we have made it completely virtual. You can do everything virtually with us, right? On Understood. just your mobile phone. And last is affordability. Yeah, in India, still affordability has been a key challenge. That there's the 10% of the population which has been contributing to 90% of the of the money being circulated. 90% of the population is still extremely poor, right? So for Yes. them, it is very very difficult to make them aware of continuous monitoring, or in general about taking care of their health. And even if they want to take care of their health, right, how you finance it, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं, right? Yes. That poor people, a 33% of the debt that poor people take is because of healthcare concerns, right? Oh. That is the kind of problem we are looking at. And a strip that you use to monitor your sugar levels is typically 10 to 20 rupees per strip. So it is not that affordable for everybody in India. So Exactly. what we've been doing is we've been also making our solutions extremely affordable. Since we are digitally first, our cost of servicing is very low. So we have Hmm. been able to provide that kind of scale and that kind of cost. And Hmm. also our devices are highly accurate with very low cost. We typically give out a glucometer at
249, 299 kind of a price scheme, which is the cheapest across in the entire industry. So Understood. these are the three key pillars which we've been aiming at and we've been solving for. Understood. So you guys are available about pan India, or like it's a specific cities that you're available in? Pan-India. So since Understood. we're digital, we do service pan India. अंडरस्टूड अंडरस्टूड कूल ठीक है इससे आगे बढ़ते हैं ठीक है Hmm. आई हैव सीन आई वाज स्टडीइंग समवेयर कि यार यूएस में अभी तक 140 हेल्थ टेक के यूनिकॉर्न्स आए हैं राइट व्हाइल इंडिया हैज ओनली 8 सो व्हाई देयर इज सो मच बिग गैप बिकॉज हम बोलते हैं कि नो इंडिया का ये डिकेड आने वाला है इंडिया ये करने वाला है इंडिया वो करने वाला है बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ गैप टू कवर राइट सो हाउ डू यू थिंक कि वो कैसा चल रहा है लाइक आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन कि अभी अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां पे हम बोल पाए कि यस वी हैव अ very good health care in our India. Yeah. So yeah, this is a two, three pronged problem. So let's first understand unicorn क्या होता है. Unicorn होता है जो 1 बिलियन का रेवेन्यू टच कर लेता है, 1 बिलियन की वैल्यूएशन टच कर लेता है. 1 बिलियन होता है लगभग आज के टाइम पर 8,200 करोड़. ठीक है, 8,200 करोड़ आपको कमाने के लिए आपकी वैल्यूएशन कैसे लगती है? वैल्यूएशन लगती है मल्टीपल्स, राइट? Yes. Typically आप मल्टीपल्स ऑफ योर रेवेन्यू और मल्टीपल्स ऑफ योर प्रॉफिट्स पा सकती है, which is essentially your investors valuing the potential that you carry. राइट? तो अगर आपको लेट्स से अगेन जो बहुत इनोवेटिव स्टार्टअप्स होते हैं उनके मल्टीपल्स बहुत हाई होते हैं, जो थोड़े कम इनोवेटिव स्टार्टअप्स होते हैं उनके मल्टीपल्स लोअर होते हैं. तो अगर आपको 8,200 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए, आपको टिपिकली मिनिमम टू मिनिमम 500 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा, राइट? Yes. ऑन अ हायर एंड लेट्स से आप अगर लेट्स से ट्रेड काइंड ऑफ अ बिजनेस में है तो आपको 4-5 हजार करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा. तो ये एक लार्ज मार्केट चाहिए होगी आपको इसके लिए. आप अगर आप कंपेयर करो, इंडिया की जीडीपी आज के टाइम पर है $3.5 ट्रिलियन की, राइट? और यूएस की इकोनॉमी है $27 ट्रिलियन की, राइट? वो हमसे ऑलरेडी 6x ज्यादा है. और उनकी पॉपुलेशन 300-350 मिलियन के आसपास है, हमारी 1400 मिलियन के आसपास है, राइट? सो इफ यू सी they have a lot of large market with a less number of people, whereas we have a very small market with very large people, right? इसीलिए जो हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हैं बट उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारी मार्केट छोटी है तो रेवेन्यू का शेयर आपका छोटा होगा, रेवेन्यू शेयर छोटा होगा तो आपके ऑलरेडी वैल्यूएशन छोटी होगी. दैट इज द फर्स्ट रीजन कि आपकी मार्केट का डिफरेंस. सेकंड इज यार, आपको सिर्फ रेवेन्यू के लिए पैसा नहीं मिलता, आपको पैसा मिलता है ऑन योर एबिलिटी टू डिलीवर चेंज, राइट? विच इज हाउ इनोवेटिव यू कैन बी. The problem is we in general in India do not believe in innovation, right? We have been worse in terms of innovation. Our education system, our government, our even private sector does not focus on innovation. Our R&D budget as a percentage of GDP or R&D budget as a percentage of profits is the lowest. Okay, so it is just a marker for us to understand that we're not focusing on the right things. Yeah, example, China is beating USA's ass in terms of the AI race. If you go and see what is happening in China and see the videos, they are government is massively investing into AI, right? And we know that in the next 10 to 15 years, everything will be AI, right? The Yes. biggest innovation will be led with AI. US is investing, US is going double down on this. SoftBank just did a 100 billion investment in AI for US. China is doubling down big time on this. And on the other hand, in India, we are still fighting about इसने beef खाया और इसने आज chicken खाया और इसने मंदिर यहाँ बना दिया और इसने मस्जिद यहाँ बना दी, right? So I think we as a country have been focusing on the wrong problems. It is the right decade for India because everything is poised, but it will currently how the situations are, it will be just a series of missed opportunities than a massive impact that we have created, right? So and we can go around boasting हमारा UPI कितना अच्छा है, हमारा आधार कितना अच्छा है, हमारा आभार कितना अच्छा है. Everything is like we're doing fantastically well, great, but we're still punching below our weight, right? China, just being of a country of almost equal size, is doing far better than us. And we Yes. need to start learning from what they're doing right and doubling down on the right things that we have. Or it will just be a sad story of missed opportunities. Yes, understood. Yeah, because we have seen कि यार हमारे वहाँ पे awareness उतना नहीं है, to be very honest.
अगर आप अपने बचपन में, हम अपने बचपन में देखूं, अगर हमारे दांत में दर्द हो, मम्मी बोलती थी लौंग रख लो दिन में सही हो जाएगा, वी डोंट नेवर गो टू डेंटिस्ट, राइट? Yeah. तो जो लोग पढ़ते हैं, जो डेंटिस्ट बनते हैं, राइट, उनको कहीं ना कहीं वो मिलता नहीं है। एंड वी एज अ मिडिल क्लास फैमिली बोल लो कि हमारे मन में जहां से पैसा बच सके बचा लो। बट आई थिंक यार आजकल यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग, यू हैव टू पुट some amount of your money and effort in your health. So ट्रू। yes, cool. डायरेक्ट So रिटर्न नहीं दिखता ना यार हेल्थ का। yes, ये चीज है। आपको जिम जाने का रिटर्न आज नहीं दिख रहा, 20 साल बाद दिखेगा। So Yes, we, in general, and it's also function of lack of resources. When you're lack of let's say not have a lot of education and you're lacking resources, you typically tend to become short term in your vision. You tend to focus on only things that are directly visible. yes, So yeah, function of that. cool, cool, cool. Yes. सही है। इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे मन में आ रहा है, बिकॉज यू नो व्हेन आई मेंशन लाइक आप जब कॉलेज में थे आप स्टार्टअप बना रहे थे, मैं हाउस इट में इंटर्नशिप कर रहा था। एट द सेम टाइम मेरे जो साथ के दोस्त थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, दे वर चिलिंग अराउंड। वो टिकटॉक पे तब आता था, इंस्टाग्राम आता, वो बनाते थे, राइट? सो हमारे पंजाब में एक बहुत कल्चर है कि हमें ट्वेल्थ के बाद पता है 90% लोग हम बाहर जाने वाले, कनाडा या अमेरिका, राइट? यू Yeah. हैव वर्कड विद स्टूडेंट्स, you have worked closely with them. How do you think these students who are not have the exposure of this life, the corporate world, can upskill themselves? What are the resources and how they can manage to pursue their career in these fields? Because I feel बाहर जाके किसी का नौकर बनने से अच्छा आप यहाँ पे काम कर लीजिए अपने देश में. That is a better thing. So how can they upskill themselves? Because you have been working with students for quite a while, right? You have worked with them, you know them better. So what is your take on this? Yeah, so firstly, I'll talk about the India versus abroad education. So what we keep reading is that यार उसकी $1 लाख की जॉब है, मतलब 80 लाख रुपए कमा रहा है। उसकी इतने $2 लाख की जॉब है, मतलब 1.5 करोड़ की कमा रहा है। उसकी 1 लाख पाउंड की जॉब है, मतलब 1 करोड़ कमा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ रॉन्ग कंपैरिजन टू हैव। द कंपैरिजन इज नॉट ऑन कन्वर्जन बेसिस, ऑन पीपीपी बेसिस। दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। आप Yes. लोग जाके ऑनलाइन एक कैलकुलेटर है, पीपीपी कैलकुलेटर, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट एंड कन्वर्ट the money that a person is earning in a country X versus what will that buy in country Y, right? So $1 lakh, just giving an example, $1 lakh in the US is typically 80 lakh rupees in Yeah. India. Yes. But that person when he is living in the US has a typically higher expenditure. उनका Yes. रेंट हायर है, उनका फूड ईटिंग कॉस्ट हायर है, उनका हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर हायर है, ट्रैवल एक्सपेंडिचर हायर है। So a person earning 1 lakh rupee will typically be living the same lifestyle as somebody earning 22.5 lakh rupees in India, Yes. right? So now when you do that parity, you can understand कि कितना delta difference है. हाँ, since they are living in the US and let's say they have a 30% odd savings, 20-30% odd savings, their net savings will be higher if they send back home. Similarly, in Canada, similarly in the European region, you can see that people doing odd jobs, even let's say a truck driver, even you working in a sales kind of a job, doing let's say semi-skilled jobs, will be earning higher than that in India, and they'll be able to send more money back home and live a better lifestyle. So even today, uh, US, UK, Canada, Singapore, Australia, all these seem very lucrative options and they do help you make more money than staying in India. True, agreed, right? Uh, but again, you have to understand कि आपके लिए क्या important है in at that point of time in life. Because for me, let's say typically everything after 5 crore rupees that you have earned is somewhat similar, right? Then what matters is who are you staying with? What are the kind of problems you're working on? How are you? How much do you value the people and friends around you, right? What is the kind of aspirations that you have and stuff? So that is the first call that you should take out as a person. Now coming to let's say a $1 lakh kind of a job in the US seems very lucrative. बट इंडिया में आते हैं, इंडिया में 22 लाख रुपए की नौकरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज की स्किल्स के हिसाब से आप इंजीनियर हो, यू एंड फ्रॉम अ टॉप टियर ग्रेड स्कूल यू कैन, आप अंडर ग्रेड हो फ्रॉम अ टॉप टियर स्कूल यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ मनी वेरी इजीली, राइट? तो फर्स्ट चीज हो गई एजुकेशन। एजुकेशन, टॉप टियर एजुकेशन अगर आपके पास है and you have done decently well in academics and other things, you can get a decent, comfortable job in India still today, right? But this is not true for everybody because not everybody is academically focused, or let's say luck doesn't pan out, or whatever.
सेकेंड चीज क्या कर सकते हैं हम? सेकेंड चीज हम क्या कर सकते हैं यार, कि देर आर लॉट ऑफ नॉन मेन स्ट्रीम थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड. Example, content creators. Content creators are making so much money, uh, and it might not seem like a career option that you can tell your friends, parents about. But what, let's say, a cushy corporate jobs gives you in a year, these people are earning in a month, yeah. Yes. So this. Secondly, example, allied healthcare professionals. India has a big supply gap of qualified healthcare professionals, allied healthcare professionals. With a basic training, you can start earning from 50,000 a month and go up to 2 lakhs a month. So they are very drone flyers, programmers, right? Photographers. There's so many allied professionals. If you're really good at, there is a huge demand. And the best part is people still, since they, why their supply gap is because people still do not value them as conventional career options. So since they're not valuing them as conventional career options, your competition is limited. पर डिमांड तो है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल Yes. इनकम बढ़ रही है, राइट? Hmm. You can Hmm. figure out an alternate path Hmm. and make sure that you are one of the best at it. You can still make money and be Yes. in the top tier of the economy. So these two things, and third, I typically understand as networking, because how your most good jobs or most good opportunities come is via referrals in general. It's because let's say आप और मैं आज काम, हम बहुत बिजी लोग हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें आज किसी की नीड है, तो हम ना ये नहीं सोचेंगे यार एक पोर्टल पे जाके ओपनिंग डाल देते हैं. क्यों? क्योंकि पोर्टल पे डालोगे 2 दिन निकल गए, 5-7 दिन में एप्लीकेशन आएंगे, उसको स्क्रीन करो, Hmm. स्क्रीन करने के बाद इंटरव्यू लो, महीना निकल गया यार, मेरे को तो महीना नहीं है मेरे पास, मेरे को तो आज काम खत्म करना है. व्हाट Yes. विल आई डू? टिपिकली ट्राई कि मेरे नेटवर्क और रेफरल में जो भी बंदा है, मैं उसके थ्रू उस काम को खत्म कर दूं. Yes. So इसीलिए the people who actually make these decisions and these golden opportunities are via networking and referral. Now, via networking and referral, what does it mean? Because I've heard a lot of people saying networking करनी चाहिए, referral करना चाहिए. क्या मतलब है इसका? मुझे बहुत टाइम तक समझ नहीं आया था. Now, what I've understood by networking and referral is not the number of people in your mobile phone. No, it is people who associate you with a different, with a particular thing in their head. For example, if I ever think about podcasts, Hmm. I should not think about Karan ki mila tha, बढ़िया बढ़िया आदमी है यार, बढ़िया बातें करता है. I might forget Karan after 2 days, 3 days. But in that conversation, if Karan mentioned 10 times about podcast and the impact he has created, Hmm. and let's say gave me a book which he has written about podcasts, and it was on number one seller, whatever, I will associate Karan मतलब podcast. कल मुझे पॉडकास्ट शुरू करना है, मुझे पॉडकास्ट करना है, मेरे नेटवर्क में किसी को पॉडकास्ट करना है, मेरे दिमाग में करण आएगा. Yes. So it is essentially meeting the right people with one thing that you want to set about yourself in their heads. Understood. Example मतलब startups. Hmm. अगर स्टार्टअप्स के बारे में बात करना है रजत, तो जितने भी मेरे लोग नेटवर्क में हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, whenever they want to do anything about businesses, they want to run an idea, invest somewhere, get a job, XYZ, they talk to me because they in their heads think Rajat equal to startups, right? So if you can decide this is what you want to do and start meeting people in those dimensions and set that in their head, and this will only be set when you're number one in that thing, right? Average. So the biggest way to fail is being average, right? If you're Yes. doing average, do it. But if Yeah. you're, let's say, excellent at it, people will slowly start recognizing you for that and start going ahead. So I think Hmm. education followed by non-conventional career options, and third is networking. These are the three options that any youngster today can use to get Hmm. good jobs. Understood. इस चीज में ऐड करना चाहूंगा यो because education something that I don't know that helped me or not in my job so far Mhm. because house it was my first internship to be very honest. मेरा पहला internship था. मैं second year में था, COVID हुआ. Everybody Mhm. cursed COVID, but I think COVID has changed my life because college बंद थे, सब कुछ था. I started working in house it. First internship, and right now the kind of life I'm living,
जो मेरे आसपास के लोग हैं जो बाहर भी रहते हैं, दे यूज टू कॉल मी एंड दे कॉल मी एवरी एवरी वंस इन अ व्हाइल एंड दे टेल मी यार करण तू लाइफ अपनी अच्छी जी रहा है यार, यहाँ पे तुम फंस गए हैं, बिकॉज दे डू अ वेयर हाउस में जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आई थिंक यार मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा, मेरी एजुकेशन को इतने बड़े कॉलेज से नहीं थी, राइट। आई कम फ्रॉम अ टियर 3 सिटी फ्रॉम पंजाब विच इज लाइक क्लोज टू लाहौर पाकिस्तान। वहां से आके अगर मैं ये कर सकता हूँ तो एवरीबडी कैन डू एनीथिंग इन देयर लाइफ इफ दे हैव दैट पैशन। 100%, 100%. Yes, understood. Cool. Rajat, I would like to understand, आपने बोला कि Rajat is equal to startups and founders, right? I would like to understand one thing. आपने पहले पॉडकास्ट में बोला, अभी बोला पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में कि यार जब आपने हाउस इट स्टार्ट करा, that was more passion driven rather than research driven, और आपने उतना अच्छा रिसर्च नहीं करा, राइट। राइट नाउ आफ्टर शार्क टैंक बहुत स्टार्टअप्स आए हैं, बहुत लोगों को स्टार्टअप करना है, मेजरली टीयर 2 टीयर 3 सिटी से स्टार्टअप आ रहे हैं, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, दे हैव स्टार्टेड देयर स्टार्टअप, वो उसको स्टार्टअप बोल रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग देयर रिसर्च प्रॉपर्ली, राइट। सो व्हाट हाउ समवन who is just about to get into startup world, who is into startup world can validate their idea right now if they have to do that from a startup founder's perspective, from a VC's perspective as well. यार करण भाई, सो इस प्रॉब्लम को ना डीपली समझना पड़ेगा यार. इंडिया एज अ कंट्री इज स्टिल नॉट ट्रूली कैपिटलिस्टिक इन देयर नेचर, ठीक है, राइट. हम लोगों को ना कैपिटलिज्म हम में इनग्रेन नहीं है जैसे चाइनीज और यूएस अमेरिकन में है, राइट, और इवन यूरोपियंस में टू अ डिग्री है. और अगर आपको बिजनेस या स्टार्टअप बिल्ड करना है, आपको कैपिटलिज्म समझना पड़ेगा, राइट. और हम लोगों को इन जनरल बेचना नहीं आता यार, हम लोगों ने बेचना नहीं सीखा है. तो as compared to an average American, average China, and talking about averages, and which is the worst way of talking, but in still to give a better perspective, even the education system or the culture that they have, right, is that of selling, is that of understanding capitalism, is that of innovation, right. yes, वो इंडिया में इनोवेशन और वो सेलिंग और वो कैपिटलिज्म का कल्चर नहीं है ना, वो कल्चर है टू एक्सेप्ट फेलियर्स, राइट. इन सिलिकॉन वैली अगर आपने 3 स्टार्टअप नहीं डुबाया ना, आपको समझते ही नहीं है स्टार्टअप फाउंडर. okay, 3 स्टार्टअप डुबा के आओ, फिर आपसे बात करेंगे, राइट. बिकॉज फेलियर दे अंडरस्टैंड, जब तक आपने फेल नहीं किया, आपने सीखा ही नहीं है. यहाँ पे तो यार हमें लगता है कि यार फेल हो गए तो मम्मी पापा को बताने में डर लगता है यार कि इनको बताऊंगा तो क्या चलेगा, yes, राइट. सो दीज आर द कल्चरल प्रॉब्लम्स दैट वी हैव एज अ कंट्री, जिसकी वजह से यू विल नॉट बी एबल टू अनलॉक रियली हाई वैल्यू स्टफ. जब तक आपके अंदर वो फियर ऑफ फेलियर रहेगा, आप बड़े चीजें करोगे ही नहीं. जब तक आपको ट्रूली सेलिंग समझ ही नहीं आएगी, आप अपना सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे, ब्रांडिंग बिल्ड नहीं कर पाओगे, आपके पास इनोवेशन नहीं होगा, आप कभी मार्केट लीडर बन ही नहीं पाओगे. यू विल जस्ट बी कॉपीइंग द यूएस एंड चाइना, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. ऑल द yes, यूनिकॉर्न दैट इंडिया हैज अपार्ट फ्रॉम फ्यू हैव जस्ट बीन कॉपीज ऑफ you, अमेरिकन एंड यूरोपियन एंड चाइनीज मॉडल्स, yeah, राइट, yep, राइट. तो कुछ इनोवेशन इंडिया लेड इनोवेशन नहीं है. हाँ, आपने इंडिया के लिए उसे कस्टमाइज कर दिया है, इंडियन इंडियन टेस्ट के हिसाब से आपको उसे पैलेटेबल बनाना पड़ा, but are they really fundamentally new technologies, new innovations? No, right. So when I say that today if you want to start a startup, I will first say don't do it, go and take a job in a startup. Please do that. And when I say take a job in a startup, it can be a small scale startup, it can be a large scale startup, but one thing that has to be important is this has to be under a startup founder who is well versed, right, okay, who has that kind of passion, who understands capitalism, who understands innovation, who understands brand building, and who, let's say, has previously done something in startups or has come from a very good professional experience or a very good pedigree. okay, जब तक आप ये नहीं करोगे ना, आपको क्यों, क्योंकि यार गलतियां सब करेंगे, बट आपको अपने टाइम और अपने पैसों पे गलती क्यों करनी है, कोई और कर रहा है ना उसमें. आप अगर उसके साथ 2 साल जॉब कर लो, आप एक्चुअली पैसे भी कमाओगे, एक्सपीरियंस भी कमाओगे, उनकी गलतियों पे सीख भी लोगे, एंड देन 2 साल बाद अपना कर लेना. वो आज का ईगो में कि मेरे को स्टार्टअप फाउंडर बनना है, आज बनना है, मैं क्यों अपने जिंदगी के 2-3 साल ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट, मेंटल हेल्थ सब कुछ बर्बाद करूं. सो इफ आई एम a person who does not, let's say, come from a business family, who does not come from, who does not have that much trust in that I can build my own startup, I would definitely go and do a job in a startup. And my first focus will be I need to work with a solid founder. मेरे को बेस्ट फाउंडर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. और हो सकता है मेरे को फर्स्ट फाउंडर पहली बार में ना मिले, क्या मेरे को तीसरी बार में मिलेगा, हाँ, तो 2 महीने यहाँ इंटर्नशिप करता हूँ, 2 महीने वहां करता हूँ, फिर तीसरी बार में जाके काम कर लूंगा, राइट. ठीक है, And when I've done that, I'll realize truly what are things going on in the market, and I'll give everything that I have to that. Fail n number of times,
actually get my learning solidified. And after 2 to 3 years, when I'm more educated, more experienced in my head, then I'll start something of my own. Understood. Understood. Cool. Thank you so much, Rajat, for giving us a brief about this, because this is very important for our audience to understand this thing, यार, कि अगर आप स्टार्टअप बनाते हो उसमें आप अपना पैसा डालते हो, अपना टाइम डालते हो, एंड जो जिस फॉर एग्जांपल जो 20 से 25 साल की एज में करते हैं या 30 साल तक करते हैं, दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर एवरीवन. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. जैसे मन में आइडिया आया, घर में सोचा, रात को सुबह स्टार्टअप बना दिया, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू गो रिसर्च प्रॉपर ऑन दिस एंड देन एग्जीक्यूट दैट आइडिया. Cool. Cool. Thank you so much, Rajat. And the last question that I would like to understand is, here, what is your secret of success? So, firstly, I do not consider myself successful yet. Okay. Uh, but if, let's say, understanding very successful people, I think we get the notion of success secret very wrong. We always think, यार ये मुझे कोई एक ऐसी बात बता दे जो मेरी दुनिया जिंदगी बदल देगी, मुझे कोई ऐसी एक सीक्रेट सॉस मिल जाए जो मेरी जिंदगी बदल देगी. I think all the success secrets are already out in the market. Okay. It is doing the boring stuff. It is doing the boring stuff every day. It is not giving up. It is keeping your head down. It is doing really hard work. It is about understanding people and putting the right thing out there. So I think the success secrets are just out there. It is about putting your head down and doing the right work. We are fortunately in a great passage of time where it's the century of India. Things are going to massively explode. Indian economy is going to double in the next 15 odd years. Uh, but rather than having it a missed opportunity and telling your kids कि हमारे ज़माने में वो हुआ था, let us make sure that we learn the right things, put the right kind of effort, and tell our kids together, देखो हमने मिलके ये build किया है, right? Understood. So this is what I believe, and I think we should be doing. Cool. Cool. Thank you so much, Rajat. It was really nice to to chat to you, and जो आपने चीजें बताई, that was very insightful, and I think a lot of people who will see this can get value from this. Thank you so much, and yeah, have a Sure. And if anybody has still your more questions, ask them to reach out to me over LinkedIn. I'm very active. I'll be more than happy to help anybody. sure. I will mention your ID in the caption so anyone can go and check that. Cool. Sure, Karan. Have a good day. You're doing great stuff, buddy. Cool. And it's great seeing from an intern to a podcast founder being built out of House It. And I wish you all the best and all the success that comes ahead. Thank you so much, because I believe this is because of House It. Every time I go anywhere, I tell that this is because of House It. That was my first internship. So yeah, thanks to you as well for this. I'm glad. I think the good karma is coming back. Chalo. Thanks, Sure. Karan. Have a good day. Bye. You too. Bye-bye.